Okay, Assalamu alaikum everyone. I think we are good to start today's session. आज का session start करते हैं और we were performing the internet communication chapter. We have seen a lot of thing in this chapter. बस आज हमारा आखिरी session होगा इस topic का, इस chapter का बच्चों. ठीक है? So without wasting any time, let's start. In our last session, we were talking about the BitTorrent stuff. I told you that it's a protocol in which we are having the peer-to-peer approach, decentralized approach, fast way to transfer the files and media. Every system is a server, every system is a client. We divide the data into smaller chunks to distribute. Then we were having different terms like seeders, swarm, tracker, leecher, lurker. We were also having the .torrent file that is needed whenever you want to transfer data, any data over the internet using the torrent. So ये सारी बातें करने के बाद अब हम लोग आगे थोड़ा सा मूव करेंगे and there are certain questions that examiner may ask in the examination about the BitTorrent stuff. One of the question that rises is a very simple question, but ये question आ जाता है आपके पास कभी एग्जाम के अंदर. So you should know कि if examiner asks you कि how does a peer find the content he or she wanted to download over torrent. तो torrent के ऊपर एक फॉर एग्जाम्पल एनीवन कोई भी अगर आप लोग कोई फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो हाउ यू फाइंड योर कंटेंट ऑन द टॉरेंट पे किस तरह आपका कंटेंट मिलता है. सो यू शुड नो द प्रॉपर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो बच्चों एवरी कंटेंट प्रोवाइडर whoever is providing the file, जो भी आपको फाइल प्रोवाइड कर रहा है ओवर द टॉरेंट, एवरी कंटेंट provider should provide a content description file called torrent file. So whoever is providing any content on torrent, bachcho, he always provide a file that is called torrent file. This is the file that contains name of tracker कि आपको कौन से ट्रैकर से ये डाउनलोड करना है एंड a list of chunks. Chunks means डेटा को आप लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इनटू स्मॉलर चंक्स इन टॉरेंट. सो आपको नेम ऑफ ट्रैकर मिलता है इस फाइल के अंदर एंड लिस्ट ऑफ चंक्स मिलते हैं दैट मेक द कंटेंट. So this is how you download the exact files. अगर आप कोई प्रीवियसली भी फाइल डाउनलोड कर रहे थे कहीं और से, so list of chunks will always remain same. जो आप चंक्स ब्रेक डाउन करेंगे, जो चंक्स को ब्रेक करेंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे आपके पास. ठीक है. So from wherever you are downloading those chunks, तो आपके पास the list will remain same.
एंड फर्दर वन मोर थिंग, ये जो टोरेंट फाइल होती है, दिस टोरेंट फाइल is three times smaller than the content, so easily and fastly distributed. ठीक है बच्चों, तो आपको एग्जैक्ट कंटेंट कहां से मिलता है? Every content provider provides you with a file that is called the torrent file. This file contains the name of the tracker and the list of chunks that are available. And आपको जो chunks चाहिए होते हैं, जिस tracker से चाहिए होते हैं, आप लोग easily क्या कर लेते हैं, get कर लेते हैं, उसको grab कर लेते हैं अपने data को. So this is how the content files are being available to you people. One more question that rises in the torrent, बच्चों, and that question is again a general question, but you should know answer to this question as well. And this question is, how do peers replicate content to provide high speed download for everyone? अच्छा, आज के जो टॉपिक्स हैं सारे थोड़े से बोरिंग टॉपिक्स हैं, सिंस चैप्टर की एंडिंग है, ये लीस्ट कॉमन टॉपिक्स हैं, जनरली एग्जाम्स के अंदर आते नहीं है, लेकिन स्टिल वी आर स्टडिंग बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ योर सिलेबस. आपकी बुक में कहीं ना कहीं छोटा मोटा जिक्र हुआ है, सो दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक्स एज वेल. ठीक है. सो हाउ डू पेयर्स रेप्लिकेट कंटेंट टू प्रोवाइड हाई स्पीड डाउनलोड फॉर एवरीवन? भाई, टॉरेंट के अंदर हाई स्पीड डाउनलोड कैसे पॉसिबल होता है? एग्जामिनर सिंपल वर्ड्स के अंदर ये चीज आप लोगों से पूछ रहा है. सो वी नो आपके पास यहाँ पे क्या होता है, पेयर डाउनलोड एंड अपलोड chunks at the same time. ठीक है. पेयर also having list of chunks from torrent फाइल. तो टॉरेंट फाइल से उनके पास लिस्ट ऑफ चंक भी अवेलेबल होते हैं पेयर्स के बाद. तो मेन एम क्या होता है बच्चों? द मेन एम ऑफ द पेयर, द मेन aim of pair is to download chunks that are rare. तो जो रेयर चंक्स होते हैं, हमारा मेन एम क्या होता है?
we need to download those chunks that are rare chunks. And when we download those chunks, so automatically those chunks, so automatically they become less rare. So this is how the high speed transfer of data is available using the torrent stuff बच्चों. ठीक है, तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए. Let me check, let me see if you have any questions till now. No, high internet speed नहीं बेटा, जुबैदा बेटा नहीं. टॉरेंट के अंदर स्पीड आपके पास मैटर नहीं करती, आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ द चंक्स मैटर करता है. ठीक है, व्हाट एक्चुअली मैटर्स इन द वर्ल्ड ऑफ टॉरेंट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द चंक्स. ठीक है, सो जो आप जब भी आप चंक्स को डाउनलोड करना स्टार्ट करेंगे, so the main aim will be always to download the rare chunks first. So when you will be downloading rare chunks first, so automatically वो क्या होंगे, because at the same time आप लोग अपलोड भी कर रहे हैं और आप लोग डाउनलोड भी कर रहे हैं. तो जब आप लोग डाउनलोड कर लेंगे रियर चंक्स को, यू विल बी अपलोडिंग दोस चंक्स, तो दूसरे लोग फिर वो चंक्स को डाउनलोड करेंगे. तो दिस इज हाउ द हाई स्पीड ट्रांसफर ऑफ द फाइल्स इज बीइंग मेड पॉसिबल. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सब लेयर्स. Let's talk about now sub layers. So when we talk about the sub layers, आप लोग को पता है, when let me draw not this color, let me pick any other color. So मैं अगर आप लोगों के सामने एक मॉडल ड्रॉ करूं, you people know sir, the first layer is of course application layer. The second layer sir is transport layer. The third layer is sir of course internet layer. The fourth layer is sir network access layer, and the last layer is फिजिकल लेयर. सो बच्चों हमारे पास कुछ सब लेयर्स होती हैं. नेटवर्क एक्सेस लेयर को हम लोग फर्दर ब्रेक करते हैं इनटू टू मोर लेयर्स. वन ऑफ द लेयर इज कॉल्ड LLC and the other layer is called MAC. सिमिलरली फिजिकल लेयर को हम लोग दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं. वन ऑफ द लेयर इज कॉल्ड PCS, physical coding sub layer, PCS, and the other layer is called बच्चों PMA. ये सारी लेयर्स बच्चों काम कर रही होती है ऑन अ प्रोटोकॉल, एंड वी नेम दैट प्रोटोकॉल एज ईथरनेट प्रोटोकॉल. इससे ऊपर जितना भी काम हो रहा होता है आपके पास, इन लेयर्स के अंदर जितना भी काम हो रहा होता है, ये टोटल काम हो रहा होता है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाता है. ऑल्दो नीचे भी सॉफ्टवेयर होता है आपके पास, लेकिन यहाँ पे आपके पास सॉफ्टवेयर इन लेयर्स के अंदर सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, सो एक्चुअली ये LLC, MAC, PCS, PMA, these all protocols are running on Ethernet protocol in your local networks. आप इंटरनेट यूज करें या ना करें, ये प्रोटोकॉल्स हमेशा क्या होते हैं, चलते रहते हैं.
Now let me explain the role of each layer. हर सब लेयर का एक छोटा छोटा रोल मैं आप लोगों को बता देता हूं. अगेन मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं आप लोगों को बच्चों. इतना डिटेल में एग्जामिनर ने आज तक कभी पूछा नहीं है, लेकिन स्टिल भाई सर मैथ्स से पढ़ने तो भाई चीजें तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आप लोग को, और हर चीज थोड़ा बहुत भी इंडिकेशन होगा कि आपका सिलेबस का पार्ट है, तो वी आर गोइंग टू कवर दैट स्टफ. सो लेट्स सी, starting with the first layer that is called LLC. Stands for logical link control. ये लेयर क्या करती है बेटा? कुछ भी नहीं करती सर. interact with internet layer. Further, ensures transmission integrity of data. कि भाई डेटा में एक लेयर से दूसरी लेयर तक डेटा ट्रांसफर होते हुए कोई चेंजेस ना आ जाए, कोई एरर ना आ जाए. तो ये ट्रांसमिशन इंटेग्रिटी ऑफ डाटा चेक करती है. दैट्स इट. ठीक है. फर्दर, ये मैंने इंटरेक्ट क्या लिख दिया भाई? इंटरेक्ट टी. ठीक है. फर्दर, द सेकंड लेयर इज कॉल्ड मैक लेयर. और आप लोग को इस लेयर के बारे में इसका फुल फॉर्म तो पता ही है सबको. मीडिया एक्सेस कंट्रोल. सो इस लेयर का मेन एम क्या होता है बच्चों? द मेन एम ऑफ दिस लेयर इज responsible for converting datagrams into frames by adding source and destination MAC address. ठीक है बच्चों, दिस इज द मेन रोल ऑफ दिस मैक एड्रेस. और भी फिर इसके अंदर आपके पास रोल होते हैं. फर्दर, वन मोर रोल ऑफ दिस लेयर इज हैंडल्स recovery of transmission after collision. अगर कोई कोलिजन हो जाए ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, तो उसका रिकवरी हैंडल आपके पास मीडिया एक्सेस कंट्रोल करता है. एंड ऑफ कोर्स ये कंट्रोल करता है यूजिंग अ प्रोटोकॉल जो आप लोगों ने अपने A1 में पढ़ा था, यूजिंग CSMA CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन प्रोटोकॉल यूज करते हुए ये इसको टैकल करता है, इसको हैंडल करता है बच्चों. अनदर लेयर वी वर हैविंग इन द फिजिकल लेयर. तो फिजिकल लेयर के अंदर हमारे पास दो लेयर्स थी. द फर्स्ट वन वाज PCS, stands for physical coding sublayer. So when we talk about the physical coding sublayer, इस लेयर के अगेन सिर्फ दो रोल हैं आपके पास. रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग डेटा
making data ready for ट्रांसमिशन। ठीक है, सो ये क्या करती है लेयर, आपके डाटा को ट्रांसमिशन के लिए रेडी करवाती है, एंड ऑफ कोर्स डीकोडिंग एज वेल। लेकिन ये डीकोडिंग कहां पर होगी, एट रिसीवर साइड। फर्दर एक छोटा सा पॉइंट ये भी आपको पता ही होना चाहिए, खैर, रिसीव्स डाटा फ्रॉम मैक प्रोटोकॉल। द लास्ट लेयर बच्चों इज the last layer is PMA. Physical medium attachment. So when we talk about this layer, इस layer का भी बच्चों एक ही रोल है आपके पास, and the role is responsible for transmitting signals and receiving at receiver side. So these are the role for the sublayers, and again you people should know ये sublayers सारी कहां पे चलनी है, ये सब चलती हैं आपके पास on a protocol that is called Ethernet protocol. So let me check if you have any questions till now. So I think कोई ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। ग्रुप 1 में स्टिल वी वर हैविंग फ्यू क्वेश्चंस, लेकिन यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और लेट्स सी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज लेट्स डिफरेंशिएट व्हाट इज द रोल। एग्जामिनर कैन आस्क यू कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट, so what is the role of TCP in particular, and what is the role of IP in particular? So this is the question that examiner might ask you in the examination. एक दफा पूछा भी था शायद। तो ये बेटा आप लोग को पर्टिकुलर दोनों के रोल्स पता होने चाहिए सेपरेटली, कि व्हाट आर द रोल्स ऑफ टीसीपी एंड द आईपी इन टीसीपी आईपी मॉडल। सो लेट्स किक ऑफ विथ द आईपी फर्स्ट। आईपी प्रोटोकॉल वर्क करता है नेटवर्क लेयर के ऊपर, इंटरनेट लेयर के ऊपर। सो इसकी फंक्शनैलिटी थोड़ी बहुत उससे सेम होगी आपके पास। मेन एम होता है आपके पास route the packets to correct destination. Further, adds source and destination IP addresses. Further, defines the addressing method used. Example, कोई सब नेटिंग अप्लाई हुई भी है, हमने सब नेटवर्क्स बनाए हुए हैं, एंड ऑल दैट।
तो ये भी आपके पास आपका प्रोटोकॉल ही डिफाइन करता है। फर्दर एक और काम होता है इस प्रोटोकॉल का, दैट इज encapsulates data into datagrams. So this is also the role of IP बच्चों. So these are the major role of internet protocol. इस प्रोटोकॉल के मेजर 4 रोल ये हैं आपके पास। करेक्ट राउटिंग हो जाए, सोर्स डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस होते हैं आपके पास, किस तरह एड्रेसिंग मेथड है वो आपको बताता है, एंड एनकैप्सुलेट करता है डाटा को इनटू डाटाग्राम। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द टीसीपी, तो टीसीपी के तो बहुत सारे रूल हैं आपके पास दैट वी कैन स्टडी ओवर हियर। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, that is establish and maintain connection with server. Further, breaks data into segments. Further, add packet sequence number. Further, send data to network layer. Further, acknowledges all packets that arrive. Reassemble the packets and if there is any packet loss, अगर कोई पैकेट लॉस होता है आपके पास तो वो भी कौन डील करता है, टीसीपी डील करता है उसके साथ। हैंडल्स retransmission of packets if they are lost. So these are the major role बच्चों of TCP that you should remember, that you should know. So we have seen the difference between TCP and IP. We have seen the sub layers as well. There are 4 sub layers in total. Further, we have seen that how peers replicate the content for high speed download for everyone. Further, we have seen how does a peer find the content he wanted to download. We have seen the torrent stuff. We have seen how routers work. We have seen how the difference between the packet switching and the circuit switching. We have seen the security features that are provided by the transport layer. We have seen the differences between the UDP and TCP. We have seen the difference between POP3 and IMAP. We have seen how HTTP works, how FTP works, how SMTP works. We have seen the functionality of each and every layer. हमने हर लेयर की यहाँ पे फंक्शनैलिटी भी क्या करी देख ली. After that, we have seen the naming convention as well.
that there's a difference between the naming convention. OSI model naming convention is different as compared to the TCP/IP model naming convention. Further, we have seen the packet as well. कि एक पैकेट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होती है. We have seen what we call data at the different layers: transport layer, application layer. What are the basic stuff that is needed whenever we are transmitting the data, and why the layering concept is being applied, and what is all about the TCP/IP model. So इसी के साथ हमारा ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट होता है. Although it was a very small chapter, प्रीवियस आपके पास TCP/IP से प्रीवियस इंटरनेट कम्युनिकेशन से इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये बहुत छोटा हो चुका है आपका चैप्टर. पहले तो बहुत बड़ा चैप्टर था आपके पास. नाउ लेट्स चेक द सिलेबस एज वेल. जरा सिलेबस भी चेक करते हैं और आपको भी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं तो उनको भी कैटर करता हूं मैं जरा. सर कैन यू स्क्रॉल अप फॉर द क्वेश्चन आंसर पार्ट? ऑफ कोर्स व्हाई नॉट. देन आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दिस स्टफ, तो देख लो. So meanwhile, let's see the syllabus as well and check करते हैं जरा syllabus के अंदर क्या क्या चीजें हम लोगों ने अभी तक cover up कर ली हैं and where we are standing after 1 month of A2 level. So I think Zain की तरफ से अब इजाजत होगी. Zain, I am moving. फिर मैं अगर आपने कॉपी नहीं किया होगा तो फिर वापस ओपन कर दूंगा for you. But this was the chapter that we were working on. Ali Zain, I will try my best कि मैं जल्दी अपलोड कर दूं. So this was the chapter that we were working on, protocols. Understand why protocol is essential for communication between computers. Show the understanding how protocols are being implemented using the stack view like layering approach model. Each layer has its own functionality. Explain the understanding of TCP/IP protocol suite. We have seen in detail 4 layers: application layer, transport layer, internet layer, link layer. We have seen the purpose and functionality of each layer. The application, when a message is sent from one host to another host over the internet, how data is being transmitted over internet, we have seen that as well. Show the understanding of the protocol: HTTP, FTP, POP3, IMAP, SMTP, BitTorrent, and their purposes. BitTorrent is a file sharing peer-to-peer model. So we have seen all the things in detail, bachcho. Further, circuit switching and packet switching, benefits, drawbacks, their differences, their application where they are used. Like पैकेट स्विचिंग आपके पास ओवरऑल इंटरनेट की दुनिया के अंदर ही पैकेट स्विचिंग यूज होता है आपके पास. एंड सर्किट स्विचिंग जब हम लोग टेलीफोन कॉल्स करते हैं लाइक यूजिंग द PTCL, इट इज कॉल्ड PBX switching stuff, or whenever we need a dedicated connection we go for the circuit switching. Understand the function of a router in packet switching. So आप लोग को पता है राउटर पैकेट स्विचिंग के ऊपर काम करता है. And how does a router works, अब आप लोग को अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग क्लियर है. Explain how packet switching is used to pass messages across the network including the internet. So हमने पूरा देखा हुआ in detail कि how data is being transmitted using the packet switching stuff. कि हम लोग किस तरह डाटा ट्रांसफर करते हैं, डाटा ब्रेक किया जाता है. Every packet is independent, हर पैकेट अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है. At the destination side we arrange the packets on the basis of packet sequence number. और जो पैकेट्स जो है आपके पास लॉस हो जाते हैं, we ask the sender to resend the same packets again. So this is the philosophy of packet switching and we have done this in detail. So अच्छा, इसी के साथ अगर हम थोड़ा सा ऊपर चलें, so we have seen the floating point numbers as well. We have seen the file organization and access as well, and we have seen user defined data as well. तो यहाँ तक हम लोग बच्चों अभी तक कवर अप कर चुके हैं. इसको आज हम लोग बस अब यहीं पे होल्ड करेंगे और बस अब हम आगे नहीं जा रहे, इसको यहीं तक होल्ड करेंगे. अगर आप लोग के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, फील फ्री टू आस्क. एंड इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में इसको आगे फर्दर हम लोग कैरी ऑन करेंगे. एंड कल से हम लोग अब वर्क ऑन करेंगे ऑन the syllabus content that are 19 and 20, that is the Python and the pseudocode stuff. So हम लोग अब पेपर 4 के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे from Wednesday onwards. So I think we are good. So आज इसको यहीं तक होल्ड किया हम लोगों ने. इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे. थैंक यू एवरीवन. अल्लाह हाफिज. रियान फॉर श्योर बेटा, लेट मी ऐड. अच्छा मैं वो रिया उसके लिए वो खोल दूं, ये क्वेश्चन आंसर सुनो. रियान लेट मी ऐड यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप बच्चा.
तो जब आप फ्री हो जाए तो मुझे जरा एक कॉल। घर पे चाहे 10 कम